Sat Shri Akal, Namaskar, and a very good morning to everyone who is joining us over here in this live interactive session of ours. Today's live session is a special session on epilepsy, upsamar. While we are discussing about epilepsy, upsamar, you are welcome to ask any of your questions in regards of any disease for which you are taking treatment from us or for which you want an Ayurvedic advice for us. The most important thing for us to understand over here is why is today's topic अपसमार। हमें आज अपसमार का चुनाव क्यों करना पड़ा, एपिलेप्सी का रीजन क्या रहा आज एज ए टॉपिक लेने का। उसका सबसे मेजर रीजन था कि बहुत से ऐसे हमारे ऑटिस्टिक पेशेंट्स हैं जिनके केस में सीजर्स भी आते हैं। उसके अलावा बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके केस में क्योंकि सीजर्स आ रहे हैं, ड्यू टू दो सीजर्स उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। जो ट्रीटमेंट बेसिक चलता है उनका एपिलेप्सी के लिए, बहुत से केसेस में उस कारण से भी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, बच्चे में स्लोनेस देखने को मिलती है और कई बार जो ऑटिज्म है उस कारण से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ सवाल पैदा होता है कि एपिलेप्सी, सीजर्स जिसे कि मिर्गी भी बोल देते हैं, क्या वाकई में ही आयुर्वेद सीजर्स को ठीक कर सकता है? क्या सीजर्स जड़ से ठीक हो जाते हैं? तो यहां हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी के अंदर भी सीजर्स हो रहे हैं तो वो सीजर्स बिना ब्रेन डैमेज उस केस में भी हो सकते हैं और सीजर्स विद एन एसोसिएटेड ब्रेन डैमेज के केस में भी हो सकते हैं। और ब्रेन डैमेज कई प्रकार का हो सकता है सीजर्स में। कई बार जब एक बच्चा डिलेड क्राई है बेबी, या क्राई तो ठीक किया, बर्थ के इमीडिएटली बाद हैवी जॉन्डिस, हैवी हाई लेवल का जॉन्डिस हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर गया बिलिरुबिन, उसने कुछ डैमेजेस कर दिए। कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई या किसी के केस में मेनिंजाइटिस हो गया स्वीयर वाला, कोई एक्सीडेंटल रीजंस रह गए किसी भी कारण से, और कुछ केस में कुछ क्रोमोसोमल रीजन से भी, जेनेटिक्स के कारण भी, जब ब्रेन जो कि पूरा कंट्रोलर है पूरी की पूरी बॉडी का, वो कंसिस्टेंट सिग्नल्स नहीं भेज पाता है तो सीजर्स आते हैं। आप जरा सोच के देखिए, आप में से जिन लोगों ने भी पावर कट के टाइम पे एक जनरेटर का बैकअप देखा हो, तो कई बार अगर पावर कट हो गया और बैकएंड से हमने जनरेटर चलाया और जितनी उस जनरेटर की कैपेसिटी है उससे अधिक लोड उस जनरेटर के ऊपर है तो लाइट्स फ्लिकर करने लग जाएंगी, गैजेट्स फ्लिकर करने लग जाएंगे। अब यहां तो उस समय उन लाइट्स को और उस जनरेटर पे डाले जाने वाले लोड को कम करना पड़ेगा, तब वो फ्लिकरिंग कम होगी। और यहां फिर दूसरी तरफ हमें जनरेटर का लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे केस में जब हम सीजर्स की बात करते हैं तो जनरेटर का लोड तो नहीं बढ़ सकता है। उसी कारण से ही सीजर्स के केस में ऐसी मेडिसिन दे करके जो बॉडी के कुछ नॉन एसेंशियल प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर दें, ताकि ब्रेन के ऊपर, जो ऐसा ब्रेन है जिसके केस में कोई डैमेजिंग रही है पहले ऑर्गेनिकली, या जो सेकंड केस मैंने एपिलेप्सी का आपको बताया जहां पे डैमेजिंग कोई नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बॉडी के अंदर कम है, इम्बैलेंस्ड है, उन दोनों ही केसेस में एलोपैथी के अंदर कुछ कॉमन मेडिसिन जैसे कि वेलपोरेट सोडियम है, डाइवेलपोरेट के केस में वो लोग यूज करते हैं, कार्बेमाजेपिन है, टॉप्रीमेट है, कई प्रकार की मेडिकेशंस यूज करके कोशिश की जाती है कि प्रोसेसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाए ताकि ब्रेन के ऊपर बोझा कम आए। अब कुछ केसेस में जब कंसिस्टेंटली प्रोसेसेस को स्लो डाउन किया जाता है तो ब्रेन को अपना न्यूरोट्रांसमीटर लेवल नॉर्मलाइज करने का मौका मिल जाता है, या कई बार जो डैमेजेस हुए होते हैं हमारी बॉडी खुद करेक्ट कर देती है अगर वो स्मॉल डैमेजेस हैं। तो उस केस में तो एलोपैथी के साथ भी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद व्यक्ति सीजर से मुक्त हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में इतना लकी नहीं होते हैं पेशेंट्स। किसी में टेम्पोरल मीजियल स्क्लेरोसिस, किसी में ऑसिपिटल रीजन के केस में सीजर्स, अलग अलग ब्रेन के सीजर्स के रीजन हो सकते हैं और अलग अलग एरियाज से जो सीजर्स हैं वो इवॉल्व हो सकते हैं और बहुत से केसेस में सारी जिंदगी
हमें वो लोड कम करके रखना पड़ता है, तो सारी सारी ज़िंदगी वो एंटी एपिलेप्टिक खानी पड़ती हैं। वहाँ बहुत फ़ायदेमंद है अगर हम आयुर्वेद का इस्तेमाल कर पाएँ। हमें आयुर्वेद में इसलिए नहीं आना है कि एलोपैथी बुरी है। अक्सर जब हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो एक कॉमन सी चीज़ होती है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको कहेंगे जी एलोपैथी बहुत बुरी है, उसे इमीडिएटली बंद कर दो। एलोपैथी वालों के पास जाओ तो वो कहेंगे आयुर्वेद बहुत बुरा है, वो लोग तो क्वैक्स हैं। भाई भुगतना तो मरीज को पड़ रहा है, जिसकी फैमिली के अंदर सीजर्स आ रहे हैं वो बेचारा करे तो क्या करे। तो हमें याद रखना है एलोपैथी का अपना रोल है। क्या रोल है? उसने टेम्परेरीली वो लोड को कम किया हुआ है। तो अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं और लेते लेते हमारे पास आते हैं तो आपको अपनी एलोपैथिक मेडिकेशन को इमीडिएटली ना ही घटाना है ना ही बंद करना है। और वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद क्या करेगा? वो जो जनरेटर की कैपेसिटी मैंने आपको एग्जांपल दी उसे बढ़ाएगा। आपको जब पता है आयुर्वेद में मल्टीपल ऐसे मेध्य रसायनस हैं जो हमारे माइंड की कैपेबिलिटी को, ब्रेन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और कुछ हद तक रिपेयर वर्क भी करते हैं स्मॉल डैमेजेस का। सो इसी कारण से जब हम एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम डायरेक्टली आयुर्वेद में आ जाते हैं तो फिर दोनों काम हम आयुर्वेद से ही करते हैं। सिम्टोमेटिक रिकवरी भी आयुर्वेद से और मेजर अंडरलाइंग डिजीज का जो ट्रीटमेंट देना है वो भी आयुर्वेद से। तो जब ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली की जाती हैं तो बहुत से पेशेंट्स के केस में इंप्रूवमेंट और बहुत से पेशेंट्स के केस में कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम द डिजीज जो है वो पॉसिबल हो पाती है। सो इसीलिए अगर सीजर्स की प्रॉब्लम, एपिलेप्टिक फिट्स की प्रॉब्लम, अपसमार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास संपर्क कर सकते हैं और हर्ब्स, पंचकर्मा एज वेल एज देव पाश्य चिकित्सा, उस मालिक के साथ जोड़ना, तीनों ही चीजों के संगम से हमारी कोशिश रहती है कि आपके अपनों के केस में हम उन्हें सीजर फ्री लाइफ दे सकें। अब यहां मैंने बात की देव पाश्य चिकित्सा की भी, परमात्मा से जोड़ने की भी। तो हम में से बहुत से लोग हैं साइंटिफिकली चलते हैं, वी डोंट बिलीव ऑन कि ये एंशिएंट टेक्स्ट में क्या लिखा होता है। लेकिन हम में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, आचार्य चरक ने जब अपसमार के बारे में बताया है तो वहां बताया है प्रघर्षण देव गुरु द्विजा नाम, कि अगले जन्म में सीजर्स उसको हो रहे हैं जिन्होंने किसी पूर्ण गुरु को, किसी देवी देवता को तिरस्कृत किया है, इंसल्ट किया है जाने अनजाने में। सो क्योंकि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है सीजर्स के साथ और मैं तो स्पिरिचुअली बिलीव करता हूं जी मालिक में, तो मेरी कोशिश रहती है कि जहां मैं एक डॉक्टर हूं और साइंटिफिक ट्रीटमेंट करवा रहा हूं, बिना किसी वहम में डाले, बिना किसी पंडित के पास भेजने के, बिना किसी और ऐसे व्यक्ति के पास भेजने में जो स्पिरिचुअल पावर्स क्लेम करता है, मेरी कोशिश रहती है कि पेरेंट्स को ये कहना कि सुबह शाम जिनको भी आप मानते हो उनकी रजा में अपना सिर जरूर झुकाएं, उन्हें याद जरूर करें, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप पक्के तौर पे सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सीजर से बाहर आ जाए। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऐसी कई हर्ब्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे आक्षेपों को कम करती हैं, सीजर्स को कम करती हैं, जैसे कि उष्ट लिवेंडर जिसे हम बोलते हैं, इट इज वन ऑफ देम। भूर्जपत्र, दैट इज वन ऑफ देम। अगेन कुछ हर्ब्स हैं जटामांसी, वचा वगैरह, तगर, जो रिपेयर वर्क करती हैं, जिसका मैंने आपको साथ में बताया। तो ये सारी ही हर्ब्स हमने कंबाइन करके एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि जब तक आपको कंसल्ट करने का टाइम ना मिले, आप अपने किसी भी प्रकार के एलोपैथिक इलाज के साथ अनअपसमार, नाम है अनअपसमार कैप्सूल्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इन अनअपसमार कैप्सूल्स का प्रयोग आप अपनी किसी भी चल रही दवा के साथ कर सकते हैं सीजर्स से अपने बच्चे को ग्रेजुअली बाहर लाने के लिए। सेकंड
कॉम्बिनेशन जो जनरली मैं यूज करवाता हूं वो है वचादी घृत। वचादी घृत हम कई जगह पे जहाँ पे कॉग्निशन को हमें इम्प्रूव करना है वो हम यूज करते हैं। और वचादी घृत हम भरोसा नहीं रखते हैं मार्केट के बने हुए घी का। वचादी घृत हम हमेशा खुद बनाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वचादी घृत को बनाने के लिए गोघृत का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, गाय का घी। और मेजोरिटी कंपनीज जब बताती हैं तो क्योंकि जो घी है देसी गाय का एक्सपेंसिव है, तो अनलकीली वो लोग गाय का घी यूज करने की जगह बफलो घी यूज कर लेती हैं। बेस ही गलत हो जाता है। तो वचादी घृत वो सेकेंड मेडिकेशन है। थर्ड मेडिकेशन जो कि हम अपने ऑटिज्म वाले बच्चों में भी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं और सीजर्स में भी बहुत लाभ करती हैं, वो है ब्रेनो ए सिरप। अब ब्रेनो ए सिरप अगर हम इंडियन पेशेंट्स को दे रहे हैं तो ब्रेनो ए सिर्फ हम देते हैं वहां जहां पे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। लेकिन सीजर्स के केस में कभी भी ब्रेनो ए सिरप आपको डॉक्टर की सुपरविजन के बिना नहीं इस्तेमाल करना, जैसा कि मैंने पहली वाली दो मेडिसिन के लिए दिया है। अगर आप सुपरविजन के बिना इस्तेमाल करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज ब्रेनो आर सिरप। ब्रेनो आर सिरप एक ऐसा सिरप है जो निर्दोष है, कभी भी सीजर्स में नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही पहुंचाएगा। अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माइल्ड वैरायटी, सिरप वैरायटी, ग्रेन्यूल्स वैरायटी, डीएस की तरफ कैप्सूल्स के फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म्स में ब्रेनो आर सिरप जो आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं सीजर्स को गुड बाय कहने के लिए। मुझे बहुत देर से आप सुन रहे हैं और मैं जानता हूं कि हर बार की तरह आपका सवालों का सिलसिला जो है उसका जवाब देना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हमेशा की तरह ही मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मिस होने पाए, तो हम आपके क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज जी सर। जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या आप ऑटिज्म से बाहर आ सकती है? अप्रोक्सीमेट कितना टाइम तक ट्रीटमेंट चल सकता है? साथ ही हमें फाइनेंशियली कंसर्न भी है, आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पेशेंट का नाम है एयाज, फादर नेम जावेद, एज 8.2 ईयर। देखिए, आयात के केस में आयात 8.2 ईयर्स की है सर। और मुझे डेफिनेटली आपके कोऑर्डिनेटर वासु ने डिटेल्स बताई हैं एज के बारे में। आपने फाइनेंशियल कंसर्न्स की बात की है, यू आर ऑलवेज वेलकम एट आवर अमृतसर सेंटर। लेकिन थोड़ा सा हम लेट हैं आयात के केस में। 8.2 ईयर्स की एज है। एक बच्चे का इलाज हम कर सकते हैं 13-14 सालों तक परफेक्टली। उसके बाद ऑडोलेसेंस आ जाती है, दवाइयाँ काम करना कम कर देती हैं। हमें यहाँ याद क्या रखना है कि आयात के केस में अगर वाकई में ही हम ये चाहते हैं कि आयात जल्द से जल्द जो है वो ऑटिज्म से बाहर आए, हमें यहाँ डिले नहीं करना है, क्योंकि एज इज अ वेरी मेजर फैक्टर। 8.2 ईयर्स पे मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि इट इज पॉसिबल बट इट हैज टू बी सुपर क्विक। हमें क्विक रखना है, तब डेफिनेटली ये संभव है। बात पैसे की नहीं है सर। देखिए, आज उस मालिक की दया से पिछले 22 सालों से हम वर्क कर रहे हैं। आयुर्वेद की मदद के साथ प्रयास रहता है लोग रोगों से बाहर आ पाएं, सही मार्गदर्शन मिल पाए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे पास इलाज कराने आता है, मिडिल क्लास भी आता है और अमीर से अमीर भी आता है। हर व्यक्ति को उसकी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम गाइड करते हैं। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम उनकी कॉस्ट कटिंग करते हैं, बचाते हैं उनको सिरप की जगह पे काढ़े दे करके। हम काढ़े प्रोवाइड करवा देते हैं, हर्ब्स सिरप आप घर पे बना सकते हैं। लेकिन हम अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स तो मैनेज कर सकते हैं सर, आयात की बढ़ती हुई एज नहीं। हमें अगर वाकई में ही आयात को ऑटिज्म से बाहर लाना है, एक दिन भी हमें और लेट नहीं करना है जी। नेक्स्ट। सर पेशेंट नेम रौनक, 529219, एज इज 10.1 ईयर। Then a major concern is child is getting very agitated and he is hurting his nose too much. He has developed bruising and a visible scar on his nose. As per Dr. Gurpriya, sensory processing disorder is the major concern. So in case of
Ronak, yes, definitely, sir. It becomes tough if a child is facing so many problems. Again, the age is 10.1 years, and gradually the hormonal levels of Ronak is going on a upper side. So here, as I can see, you are giving Brenoir concentrated 10 ml, 0, 10 ml, Brenoir hot sip DS 0, 0 and 5. So what we need to do is immediately increase the dosage of Brenoir hot sip DS to 10 ml in the afternoon, 10 ml at night. Keep Brenoir concentrated in the same dosage of 10 ml in the morning. In the afternoon, as I just mentioned, it will become Brenoir hot sip DS 10 ml. And at night, the Brenoir will be replaced with Brenoir DS. So we need to change the kind of Brenoir being given to Ronak. Mukta Pishti, as I can see, it is 0.125. Since his age is 10.1, the required Mukta Pishti in his case ideally is 250 milligrams. Give it in 250 milligram dosage to him. Babuna sachet is for constipation. If he is constipated, with 5 ml you can go to 10 ml, because if the abdomen is not clear, if the stomach is not clear, if there are gastric problems, a child will get agitated. However, if there is no constipation now, then 5 ml of Babuna drops is good enough. Pumpkin seed oil, again, I don't know why we are giving 4 drops. I prescribed 8 drops. That is the ideal dosage in a 10-year-old child, and they are the ones which are again pacifying. Jetamansi oil, yes, you are giving 2 drops. And as I can see over here is 12 sessions have been done with psychologist Rahul and 2 with Gurupriya ji. So total 14 sessions have been done till now. Again, we started in September, October, November, December, and now a part of January. So in effectively it is 4 months now from when we started. The minimum number of sessions in 4 months which should have been carried out was 16, and the suggested sessions if a parent is unsatisfied is 32 bi-weekly session. So what I feel is initially, so that you people don't get demotivated and Ronak can come out of everything, at least 2 sessions per week are advisable, or if possible for you, if you can be there with us for a month, say, where we can initially work on Ronak and help you guys in getting him out of these severe sensory issues and this sensory input regulation problem, because the panchkarma therapies which we do are very, very helpful in all this stuff. So if it's possible for you, try this out. The changes which I have suggested in the medication can immediately be carried out. The increasing of the number of ABA sessions also need to be done. But again, to keep you motivated as a parent, my advice as a consultant, if it is getting tougher at home, don't waste time. There is nothing more precious than the life of your child. Leave everything aside. Be there with us for some days, month or 2 months, depending upon your curriculum back there in UK, and we don't won't let you down, because it is really very important in the beginning part. Once you have seen all those improvements, which will gradually be coming over there, then you won't be demotivated. So initially, yes, if you can make it with us, it will really be helpful for you. Yeah, next question, Jogan. Ji, sir. Sir, patient name is Anshdeep, age 9.10, joined us from UK. The major concern is child makes a fist of his hand and then hits his head with full force. Mhm. That's a concern and passes to 7 to 8 times a day. Hmm. Over there, we need to stop the Manasamitra Vadakkam and Brahmivati, which we have already stopped as we guided. And then Brenoir hold sip mild are going on 5 ml 0 0, concentrated is 0 10 0, and DS is 20 ml at night. So, and this is a common thing which will always happen in children when it is too cold or too hot. So, in a weather which is too cold, a child generally will be showing some agitations, sensory issues which are increased. So here also, it's good that you're already having Breno-R WhatsApp DS, which is being given 20 ml at night. Add 10 ml of Breno-R WhatsApp DS in the afternoon also. Let Breno-R concentrated in the afternoon be reduced to only 5 ml. So in the afternoon, it will become 5 ml of concentrated and 10 ml of WhatsApp DS. Rest everything is going on perfectly. Bowel care has recently been started for the increased tools.
what I would advise is even better than bowel care if you can go for some probiotics and prebiotics in his case, because bowel care, yes, it will help, but it will take a lot of time over here. Had you been in India, enzyme would have really helped, but enzyme being a liquid, it will take a lot of time in shipping you enzyme. So for the timing, what you can do is go for a good prebiotic or a probiotic, and that will also help. I hope you are doing Hing Pichu, the Nabhi Pichu, which I guide, the Hing Pichu. That is a must to be done over there, which will really be helpful. And again, as I can see over there, the total number of sessions over here are 14. So all of you out there in UK, please do remember the minimum recommended sessions are weekly sessions. But wherever the things are going tougher for you in extreme winters, in extreme summers, don't miss out on going for 2 sessions per week. When the weather will normalize, then you won't require those increased number of sessions. Yeah. Yes. So patient name is Kabir Singh, age 5.8 year, and then major concern is cognition is not age appropriate, speech limited understanding and sensor issue. Speech is a highly concerning factor. So over here, as I can see that you did some Panchkarma therapies back in November 2024, but after that, it was a bit unlucky. The rules have changed in US and you were not able to make it over here. That is a pretty understandable also. Had you been able to be there with us, just like you were there with us initially, the things would have been really better for us. But that cannot be helped. And currently, I need to understand whether you are currently in UK or in US. I am a bit confused in that because the time zone in which we are currently doing this live session suits UK. The US one is the night one. So it has not been very much clarified to me by the coordinator whether it was in US or in UK, whether you're in US or in UK. And I would also like to know the exact place, the exact city or state where you are currently stationed, so that I can see if there is any of our associated Panchkarma centers near you. I can guide you over there for some Panchkarma therapies so that over here the child will get a lot of support with those Panchkarma therapies. And if you are not being able to be over there with us here, you can get it done over there. We don't want to delay it. And since you have mentioned that you have already underwent 47 psychological sessions and otherwise the things are good, but the speech is not very much improving, what I would advise over here is as quickly as possible, let us connect on a video conferencing session, on a one-on-one session, where my team analyzes everything, compiles the case of Kabir, and shares it with me. Let me analyze everything. Let me see what needs to be done over there. So, Ashima, as a coordinator, you are associated with them. Get back to them and cross check and see. Try preponing their video conferencing. Keep others to a later time so that we can check and we can do the needful over here in this case. It becomes important to analyze everything. Yeah. So patient name is Satvik, 528281. Coordinator name is Nitya. My child Satvik has been undergoing. Before we take the next question, there will be a small break which we'll be taking. There are some reports which have been shared my way, which I need to analyze. So stay tuned with us. We are not going anywhere. It is just a very small break which we are going to take with you from you guys, and very soon we will be right back with you. Yeah. I can't remember anything. I wish I could help her with the exam. In our time, my grandmother used to mix special herbs and almonds. She made us drink it every day. And believe me, we remembered everything. Best of luck, Beta. Thank you. I can't remember anything. Doctor, our child doesn't remember anything. She studies so much, but still forgets everything. What can we do? In today's world, we can't do what our grandfathers used to do. But there is a company that still takes care of everyone's health. The Risht Pusht. Risht Pusht Braino A syrup improves your child's memory and concentration. Old tips parents love. Risht Pusht Brino S syrup. After drinking Rish Push Braino A, I remember everything. Excellent job. We are incredibly proud of your hard work. Thank you, ma'am. Support your child's exam journey with the right choice. Risht Pusht Braino A.
Welcome back. So we are going to the next question once again. Yes, please share the next question. Patient name is Satvik. Coordinator name Nitya. ID is 528281. My child Satvik has been undergoing treatment for nephrotic syndrome since August with both Ayurvedic and allopathy medicines. We gradually tapped down the allopathy medicine, but within a week stopped them protein reprepared in the urine and swelling developed around the eyes. Ma'am, it's a sincere request to you. I requested it to you the last time also. See, tapering down of allopathic medication is not very easy. It has to be tapered down. We are to get rid of it, and this was what I stopped you from. I clearly guide each and every patient of mine who comes to me for nephrotic syndrome treatment that the allopathic medication has to be tapered down under the expert advice of my pediatrician either or my direct medical advice. It has not to be stopped without one of these things. So it was very wrong that it was done. I don't know who guided that it can now be reduced. If it was any doctor from my team, you can name that doctor. We'll be getting back to the doctor also. But do remember, for the next time, be rest assured, I am more eager than you to ensure that we can taper down the medication of Satvik and he gradually doesn't have to rely on any of those steroids. I don't want that. But please be patient and please understand that it is very technical. There may be lakhs of Ayurvedic doctors around the globe. It's not easy for all of them. They have no experience in that. Even if they're in my team, I don't allow my team also to taper those down. I keep it either to myself or to my pediatricians. So please do not taper down any of your allopathic medications under the advice of any of my doctors. Either directly meet me in one of my OPDs or do a VC or meet one of my pediatricians. But don't miss it out like that. So we tried taking all of your questions today, and there may be some questions because of the time constraints which we may have missed out on. But you yesterday saw that my live session was taken by my dad, who is a motivational speaker for us, who is a guiding force for me. And I was stuck out somewhere, really stuck out. And I got scolded from him that, see, you are not keeping your word with your parents. So he forced me that rush over there, ensure that you are taking your live sessions. You have promised it to your patients. You cannot miss it out. And see, I am there in front of you. So why I'm sharing it with you is, as an entire team, we are over there to keep our words, what we promise you, as true as possible for us. And that is why God, that Almighty sitting above all of us, always helps us ensuring that yes, those words come true. So please, whatever promises we have made to you, remember that they will be committed, they will be definitely achieved. All that is required is patience, belief on us also, and on God, that Almighty also. So, with the wishes that you all stay wrist pushed, blessed, I, Dr. Navdeep Sharma, shall now be taking a break from you, but not before making a request to you. Your likes really matter a lot for me. Your shares, they also matter a lot to me. And for all of you who yesterday joined the live session of my dad, he has a channel where he helps everyone out. He tries helping everyone out with the knowledge, immense knowledge he has, on the name of Om Prakash Sharma Ayur. Team, if you can help in sharing the link of that channel in this live stream, I would really appreciate that. And that is why I am waiting to say bye to you today, because I really want if my team can share the link of his channel, because for all of you who are taking treatment from us, we are over there to help you out in all kind of treatments. But during those treatments, there are ups and downs in life, and during those ups and downs of your life, you really need someone who can morally help you out of those ups and downs of life. So the link of the channel is there on the stream for you, all of you. You can join this channel. You can ask your questions whenever. And if you feel that I am not living up to what I have promised you, if my team is doing anything wrong for you, you can also complain about us to him.
He is our guiding force. So stay happy, stay blessed, stay rich pushed. Namaskar. I can't